Good morning, students. This is chapter 11, Transportation of Material in Plants and Animals. Today we will learn about heart, the human heart. Okay, so let's start. Human heart is an organ that pumps blood throughout the body. It is just like a tennis ball. In human, heart is roughly the size of your fist. Fist means mutti. Your heart is like a fist, a double walled sac. Heart is made up of two layers. Outer covering is called pericardium. Made up of pericardium encases the heart, which serves to protect the heart and anchor it inside the chest. Where it is found? It is found inside the chest. Inside the ribs, inside the rib cage, there are heart, lungs, and liver. Heart in human and all other mammals comprises of 4 chambers guarded by valves. There are valves also. Valves are just like a door. It opens in one side. Both side is not available. Valves are one-way doors inside the heart or major blood vessels that permits the movement of blood in only a single direction. एक तरफ ही खुलता है, just like our doors in our house. Now come to heart. Human heart is made up of 4 chambers. Left auricle, right auricle, left ventricle, right ventricle. Left side is called left, right side is called right. And there are 2 entry and 2 exit. Ventricles have exit, auricles have entry. All over the impure blood which comes from body, चारों तरफ से impure blood collects and travels through veins. When veins comes near to heart, it becomes thick and it is called vena cava. Mostly it is denoted by blue color, and red color is aorta, which distributes pure blood, means oxygenated blood. Ab just listen carefully. Heart has 4 chambers. Upper chamber is called auricle, lower chamber is called ventricle. Upper has 2 chambers, right auricle, left auricle. Lower side has 2 chambers, right ventricle, left ventricle. Right auricle के नीचे right ventricle, left auricle के नीचे left ventricle. Ventricles has exit blood vessels, वहाँ से blood जो है बाहर निकलता है. And auricles has entry point of blood. Right auricle carries impure blood and left auricle carries pure blood. First of all, impure blood collects in veins throughout the body. पूरे body से impure blood लेकर के veins travels. And after, when it becomes thicker, it is called vena cava. जो ऊपर से blood आता है, that is called anterior vena cava. जो नीचे से आता है, that is called posterior vena cava. Both the vena cava enters in right auricle. Right auricle से blood जो है वो reaches up to right ventricle. In between right auricle and right ventricle, there is a bicuspid valve. Bicuspid means 2 cup shape. 2 cup shape valve होता है, which allows in one direction from auricle to ventricle. But there is no जैसे वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं जा सकता.
नो एंट्री, ओनली वन साइड एंट्री है फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल. ओके. एट द सेम टाइम प्योर ब्लड कम्स फ्रॉम लंग्स. लंग्स से प्योर ब्लड कम्स थ्रू पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट ऑरिकल. नाम याद रखना होगा, पल्मोनरी वेन्स. ठीक, कहाँ आया? लेफ्ट ऑरिकल में. और राइट ऑरिकल में कौन आया? वेना कावा. ठीक है, बोथ द ऑरिकल्स हैज एंट्री पॉइंट. राइट ऑरिकल टेक्स प्योर ब्लड. ये प्योर कहाँ पे हुआ? लंग्स में. लंग्स में यू नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. ऑक्सीजन इंटर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्स. ऑक्सीजन इंटर्स एंड इट मिक्सेज विथ interchange, or you can say exchange. Oxygen takes and that pulmonary vein comes to left auricle. From left auricle to there is a tricuspid valve, which just allow entry from auricle to ventricle, but there is no entry from ventricle to ऑरिकल. उल्टा नहीं जा सकता है. और ये दिस इज ट्राइकस्पिड मीन्स 3 कप का शेप होता है उसमें. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व. एंट्री हो गया, वेंट्रिकल में आ गया. फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल 4 बिकॉज इट हैज़ टू पंप ब्लड टू होल ऑफ द बॉडी. ऊपर भी भेजना है अगेंस्ट ग्रेविटेशन अप टू द ब्रेन एंड लोअर पार्ट अप टू द लेग्स, टिप्स एंड टोज. एवरीवेयर ईच एंड एवरी सेल they need oxygen and nutrition, and that is carried away by blood, and that is pumped by left ventricle. That is called aorta. स्पेलिंग AOR, बट हम लोग बोलते हैं एरोटा. ये एरोटा से प्योर ब्लड कम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल ओवर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग टू ईच एंड एवरी सेल. When they get oxygen and food, cells does respiration. In the process of respiration, food is break down with the help of oxygen, and we get carbon dioxide and water and lots of energy. And this energy is used to do everything. Carbon dioxide is exhaled, and water is used up, and excess water is also excreted through urine. This carbon dioxide and other toxic materials is taken away by again veins, and these veins when gets near to heart, it becomes vena cava, becomes thick, and then it again enters into right auricle. All the impure blood enters the right auricle. From right auricles to right ventricles to lungs, where it becomes pure. Impure blood becomes pure, and that pure blood comes to right auricle through pulmonary vein, and दिस इज जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकला, दैट इज कैरीड अवे बाय पल्मोनरी आर्टरी, एंड प्योर ब्लड कम्स थ्रू पल्मोनरी वेन फ्रॉम राइट लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड देन it is exited, or you can say it is distributed through aorta. Aorta has again divided into 3 parts. First part goes to brain,
second part goes to shoulder and chest region, and third part goes to lower part, abdomen and both the legs, and distribute all the oxygen to each and every cell, you know. And again there respiration occurs, carbon dioxide releases, and it is can again taken by veins, then vena cava, then again right auricle. So this is a circle, you know, this is a circle, that's why it is called circulatory system. Now look what your book says. First, aorta or aortic arc, main artery that carries blood away from the heart to different part of the body. This is ये कहाँ से निकलता है? From लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटा. फिगर दिखाएगा तुमको ऊपर में, लेकिन एक्चुअली वो निकलता है नीचे लेफ्ट ऑरिकल से. सेकेंड है पल्मोनरी आर्टरी, वेसल्स दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स. हार्ट से लंग्स, बट इट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन. Pulmonary veins, blood vessel that carries blood from lungs to हाँ ठीक है okay. Pulmonary artery carried blood from heart to lungs. It carries impure blood. That's why it carries normally pulmonary means veins means impure blood, and pure artery means pure blood. But in the case of heart, it is just opposite. Pulmonary vein carries pure blood and pulmonary artery carries impure blood. Okay. Aortic valves inside the aorta to prevent backflow of the blood from the left ventricle. Okay. Left auricle atrium, the upper thin walled chamber, left auricle का बोल रहा है, towards the left that receive blood from the veins. Left auricle. Okay. Mitral or bicuspid valve allow blood from left auricle to left ventricle. Bicuspid है, अच्छा ओके. Bicuspid valve जो है वो that is found in left auricle and in between left auricle and left ventricle. So tricuspid valve is in right auricle. Sorry, पहले हम उल्टा बता दिए थे. लेफ्ट वेंट्रिकल, द लोअर थिक वॉल चेम्बर. ओके, ये सब तो तुम लोग बता चुके हैं. ट्राइकस्पिड, राइट ऑरिकल. द ह्यूमन हार्ट हैज़ फोर चैम्बर्स. तो इनलार्ज नहीं हो रहा है, सॉरी. हाँ, चैम्बर्स एंड ऑरिकल्स एंड टू लोअर, वन कॉल्ड वेंट्रिकल, पता है. अ वॉल ऑफ मसल्स कॉल्ड सेप्टम दैट सेपरेट्स बोथ, मतलब लेफ्ट एंड राइट को सेपरेट करता है. Separates the two sides of the heart. It is made up of very strong muscles that have ability to contracting and relaxing periodically on its own while pumping through blood throughout the circulatory system. Okay. Now ये तो हम अभी बता चुके हैं, ठीक है. Now what is the process? You know, look at this picture. To all parts of our body through a network of tubes. Uppermost is right auricle, right ventricle, lower right ventricle, left ventricle. Look at this picture. Now the process. What is the process of heart pump? First of all, right auricle expands. It expands. At the same time, left auricle again expands. So what happens? Impure blood enters into right auricle, and pure blood coming through pulmonary vein from lungs to left auricle
left auricle expands and that blood enters into left auricle. Both the chambers of auricles expands at the same time. Then in a few seconds, auricle squeezes and ventricle expands. ऊपर स्क्वीज कर रहा है, आप दबा रहे हो, और नीचे वाला जो पार्ट है वो एक्सपैंड कर रहा है, वो फूल रहा है, उसमें स्पेस हो रहा है. तो व्हाट विल हैपन? द ब्लड फ्रॉम ऑरिकल विल एंटर टू वेंट्रिकल थ्रू देयर ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व. दोनों से एंटर कर गया. जैसे ही एंटर करता है समझ लो कि वो डोर बंद हो गया. अब नाउ ventricle squeezes. When ventricle squeezes, right ventricle squeezes and sends blood to lungs to become pure, and left ventricle squeezes and sends this blood to all over the body to receive oxygen. सब जगह ऑक्सीजन देने के लिए वो स्क्वीज किया. When ventricle is squeezing, at the next moment, again auricles expands and this is squeezing, that is expanding. दोनों एक साथ हो रहा है. उधर ऑरिकल एक्सपैंड हुआ, ब्लड इंटर कर गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके दरवाजे बंद हो गए, वेना कावा का और पल्मोनरी वेन का बंद हो गया. अब वो स्क्वीज़ कर रहा है, तो स्क्वीज़ कर रहा है तो ब्लड कहाँ गया? वो नीचे वेंट्रिकल में आ गया. जैसे ही वेंट्रिकल में आया, बीच का दरवाज़ा बंद हो गया. अब जब वेंट्रिकल स्क्वीज़ किया तो लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड्स ब्लड टू लंग्स टू बिकम प्योर, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल sends blood to each and every cell. At the next moment, respiration occurs and carbon dioxide etc. are released. Then these toxic things vents takes away from the cell. Diffusion, by the process of diffusion also you can say, it takes and again comes to left auricle, then left ventricle, then lungs, from lungs to left auricle. लेफ्ट हो सकता है कहीं पे गलती बोल दें, सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट. लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाई बाइकस्पिड वाल्व, और फिर वहाँ से फिर वो टू द होल बॉडी. सो दिस इज अ सर्कल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. This is the function of heart. Hope you understand. If not, again repeat this video, watch this video 2-3 times, read book. If not understand, then ask me in the class. Okay, thank you so much.